Good morning, students. So already we know the modulus of a vector, that is magnitude of a vector. Got it? So in last class we had discussed about unit vector. What does it mean, unit vector? A unit vector is the vector whose magnitude is 1. So in last class I had given you vector p is equal to what? 3 I cap plus 4 j cap. So question will be like this: what is the unit vector of this one? Unit vector of p. That means unit vector can be represented by cap. So p cap is equal to, this is the definition of this one, formula of unit vector. P cap is equal to vector p divided by magnitude of this one. Why? Because any vector can be written as its magnitude into its direction. Yes or no? Its direction, magnitude into direction. So here magnitude is looking like this, modulus of A, into direction is looking like this. That means unit vector having magnitude 1 multiplied with 1, so it will give the value of A. Got it? So this is magnitude and A cap will give the direction. So A cap is equal to what? So A cap is equal to vector A by mod A. So this is our formula. Got it? So for this question, p equal to 3 I cap plus 4 j cap, where I cap and j cap are the unit vectors along x-axis and along y-axis. So we can solve like this. Vector p is this one, 3 I cap plus 4 j cap divided by, what is mode of p? Mode of p already we have calculated. This is 3 square plus this is 4 square. So what should be the value? Value will be like this, 3 I cap plus 4 j cap divided by 5, which is equal to, that means p cap is equal to 3 by 5 I cap plus again 4 by 5 j cap. Got it? So this is our unit vector, and if you want to calculate the mode of p, you can calculate it. Mode of unit cap p, you must get it is 1. You will get 1. Okay, if you want to calculate it, it is up to you. Okay, next content is that resolution of a vector. Though it will not come in your exam, but it is very much needed. Okay, so resolution of a vector, what does it mean? I am dictating, you can write it. Resolution of a vector is the process of splitting a vector into its component such that the components are mutually perpendicular to each other. I am again telling this one. Resolution of a vector is the process of splitting a vector into its component such that components are mutually perpendicular to each other. Okay, so what does it mean? That means we have to split one vector. A vector will be given to you and we have to split it. Split माने कौन? Split माने भांगी देवा, हला? Split माने अलगा अलगा कर देवा. केतेटारे एहार कंपोनेंट गुडाक जेतेटा भी करि पारो कंपोनेंट, किंतु सेही कंपोनेंट कोन हिथिबा दरकार? म्यूचुअली परपेंडिकुलर माने कोन? 90 डिग्री. तांको भितरे केते हिथिबा दरकार? 90 डिग्री हिथिबा दरकार. Got it? म्यूचुअली माने परस्पर समस्तଙ୍କ सहित. तो आमे गतकाली देखिथिले को भलिया हिथिला, एटा गोटे x एक्सिस, एटा y एक्सिस
आउ एटा ऊपरटा एभलिया जो जाइछि ऊपरटा को एभलिया करूछु जेटा जेड एक्सिस ता माने ये तीनटा परस्पर भितरे केते होउचंदी एटा 90 डिग्री दिस वन इज योर 90 degree, this one is also 90 degree and this is also 90 degree हला ता माने तीनटा हम म्यूचुअली कंपोनेंट गुडा को बाहर करि परिबा जोटा कि परपेंडिकुलर अछंती तांको तांको भितरे सो जे कोनोसी गोटे वेक्टर देथिले हमें तीनटा कंपोनेंट हिसाब रे बाहर करिबा आ सेटा को बळे लिखि परिबो इन टर्म्स ऑफ आई कैप इन टर्म्स ऑफ जे कैप एंड इन टर्म्स ऑफ के कैप तीनटा गुडा को यूनिट वेक्टर सो वी कैन राइट इट लाइक दिस गॉट इट सो एटा को हमें को बळे लिखिबा सपोज गोटे वेक्टर देइजी जे कोनोसी वेक्टर आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ ए सपोज गोटे वेक्टर देइजी ए भलिया देइजी वेक्टर ए एटा गोटे वेक्टर ए देला सो वेक्टर ए एटा एक्स एक्सिस अछि तो वेक्टर ए को मु जदी अलोंग एक्स एक्सिस रे थोइबी हला अलोंग थोइबी कले एटा परपेंडिकुलर रोटेट आनिली ता माने जेटा एति की वैल्यू आछी कि नै तो एति की वैल्यू को कोन को जिवो ax so ax is the what ax is the components of vector a along x axis ओके ता माने एति की कोन होची एटा ax x axis आड को जाउची हला सो ax is the components of a along x axis similarly we will draw one line which is perpendicular and which will bisect the y axis and this is the value हां एटा ओरिजिन जोटा ओ रु ओरिजिन रु एति की वैल्यू टा कोन होबो एटा ay ता माने ay टा कोन होबो लिखि होबो ay is the components of vector a along y axis व्हाट सिमिलरली az ए भलिया गोटे टाणी दबो जोटा कि परपेंडिकुलर हेथिबो या सहित आ एटा हबो हमरो az सो दिस इज az इज द along z axis components of a along z axis तीनटा ax ay az तापर हम कोन लिखि परिबा a is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap गॉट इट जदि हम मन को वेक्टर a दिया हिथिबो आ कुआ हिथिबो जे ax ay az बाहर करो if in question a will be given and you have to calculate the component along x axis along y axis along z axis how should we do हां ताहेले हमें कोन करी x axis y axis z axis x axis माने I cap y axis माने j cap z axis माने k cap ओके एवळा देइजी गोटे वेक्टर ता देइजी एटा वेक्टर a ओके एवळा करा हला एटा ता माने एति की जाय a टू a जाय कोन अछि एटा ax सिमिलरली a टू एटा कर देली एटा केते हला एटा हला ay मु z axis आड़ को आणुनी वर्तमान गॉट इट ax ay so I have split the vector a into two components ax and ay along x axis and along y axis that means along I cap and along j cap okay suppose this is your angle theta एटा मन करो एंगल थीटा गॉट इट ताहेले एठी कोन देखा जाउची गोटे राइट एंगल ट्रायंगल कि नो एटा this one and this one so these three sides are forming one right angle triangle so from this right angle triangle what is the value of sin theta kon abo sin theta is equal to what sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse okay na similarly what is the value of cos theta is equal to what base by hypotenuse okay so एठी हम जदी cos theta put करिवा if we are putting the value of cos theta here cos theta is equal to base by hypotenuse देखो एटा जेहेतु एंगल थीटा तो बेस कोटा हबो बेस हबो एटा सो बेस रो वैल्यू केते हला ax हाइपोटेन्यूज कोटा होची एटा हाइपोटेन्यूज रो मैग्नीट्यूड केते होची मैग्नीट्यूड a ता माने मु एठी कोन लिखि परिबी बेस जगह रे कोन लिखि परिबी ax आ हाइपोटेन्यूज जगह रे कोन लिखि परिबी वेक्टर a जोटा कि मैग्नीट्यूड केवल a हला तो एटा को तापर मु जदी एटा कैलकुलेशन कर दोची ताहले ax इक्वल टू व्हाट ax इक्वल टू a
cos theta. So this is the value of ax, that means component of vector a along x-axis. Okay. Similarly, if I will write sin theta, then what will be that? যদি মু sin theta করছি, sin theta equal to what? Perpendicular by hypotenuse. Perpendicular মানে কোটা? এইটা কি নাই? So perpendicular এইটা আর এইটা parallel হবে কি নাই? So this is also value ay. So perpendicular is how much? Ay divided by hypotenuse is again a. So from this one, ay is equal to what? A sin theta. So যেহেতু ଆମେ ভেক্টর a କୁ କେମିତି ଲେଖିପାରିଛେ? ax I cap plus ay j cap, ହଁ କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ z axis କୁ ନଉନି, az equal to 0 ନେଇ ଯାଉଛି ସପୋଜ। ତା ମାନେ ଏଠି ax equal to କ'ଣ ଲେଖି ହେବ? ଏଟା a cos theta I cap plus a sin theta j cap, ହଁ କି ନାହିଁ? a cos theta I cap plus a sin theta j cap। तो এইটা হচ্ছে আমার in terms of component, a cos theta I cap, a sin theta j cap। ओके। सो लास्ट जो एग्जांपल दिया वेक्टर p इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ओके। ताहार जदि बाहर करिवो ताहेले एई भलिया को भलिया बाहर करिवो? हाँ, एठी p x इज इक्वल टू व्हाट? px इज इक्वल टू 3 आउ py इज इक्वल टू केते हबो? 4। सो वी कैन डू लाइक दिस। एटा x एक्सिस, एटा y एक्सिस। ता माने along x एक्सिस रे केते जाईची? along x एक्सिस रे से 3 जाईची। एटा सपोज एटा 3। along y एक्सिस रे केते जाईची? 4 जाईची। एटा हला 4। ता माने वेक्टर टा को भलिया लिखि हबो? वेक्टर टा को एठी रु स्टार्ट हेची, एठी एंड हेची। सो दिस वन इज लाइक दिस। दिस इज आवर वेक्टर p। काहे की डायरेक्शन दे देची, सो डायरेक्शन आई एम आल्सो गिविंग हियर। एटा 4 हला एटी। ताहेले मैग्नीट्यूड केते हबो? एटा मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल रो हाइपोटेन्यूज केमती बाहर करो? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रो रूट अंडर, जोटा कि मते 5 देबो। ताने एटा वैल्यूटा, गॉट इट? वैल्यू। ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च।